Hi. So thinking of HR, I must say think of MDI, think of XRI, think of test. बट अगर ये तीन बाई चांस आपके किटी से, आपके प्रोफाइल से, आपके पोर्टफोलियो से बाहर हो रहा है, तो डेफिनेटली थिंक ऑफ MHRM. मैं इस कोर्स पे बेट करता हूँ, मैं बहुत कम कोर्स पे बेट करता हूँ, बट दिस इज वन ऑफ द कोर्स जिसको मैं ऑलवेज बोलता हूँ ROI की. तो अगर आप HR थिंक कर रहे हो या आपको नहीं पता है कि HR सोचना है या नहीं सोचना है, HR में क्या क्या चीज होती है, कैसे करना है, आपका बैकग्राउंड क्या होना चाहिए एचआर के लिए, सब कुछ डिस्कस करेंगे इस इनसाइड स्टोरी में. तो ये इनसाइड स्टोरी MHRM खड़गपुर का नहीं है. इसमें आपको इनसाइट मिलने वाली है कि बॉस एचआर होता क्या है, देन MHRM में क्या क्या हो सकता है, आगे फ्यूचर प्लानिंग एचआर की क्या होती है. तो चलो, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, मेरे पास अपॉर्चुनिटी है एचआर के बंदों से बात करने का जो एचआर पढ़ रहे हैं, तो उनसे जानते हैं एचआर क्या है, उनसे जानते हैं कि आखिर MHRM में कैसे एडमिशन हो सकता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो क्या देखना चाहते हैं, एवरीथिंग फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ. मैंने दो बंदों से बात करनी है, वो कौन है क्या है मुझको नहीं पता. तो इस सेशन में मैं उनको जानना चाहूंगा, उनके थ्रू एचआर को आपको समझाना चाहूंगा, एंड MHRM में आपको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए ये भी डिस्कस करेंगे. तो ये मैं बोलता हूं, थिंकिंग ऑफ HR नॉट इन द टॉप 3 लिस्ट. अगर आपका नहीं है तो डेफिनेटली MHRM होना चाहिए. बाकी कॉलेज भी अगर आपके लिस्ट में है तो MHRM का फॉर्म फिल करो, कन्वर्ट करो, देन मुझसे डिस्कस करो कि सर आई हैव दीज कन्वर्ट्स, मैं कहां ज्वाइन करूं. अभी आपको क्या करना है, फॉर्म फिल करना है, बिकॉज इसके डेट्स खत्म हो रहे हैं. चलो स्टार्ट करते हैं इनसाइड स्टोरी. मुझको पता है कि ये कोर्स अच्छा कोर्स है, उनसे जानते हैं कि ये कोर्स कैसा कोर्स है, क्या हो सकता है क्या नहीं होता, सब कुछ इस वीडियो को लास्ट तक देखना. बहुत कुछ मैं उनसे डिस्कस करने वाला हूँ. इट्स नॉट अ पेड, मैं आपको बताता हूँ ये पेड सेशन नहीं है, ये एक इनसाइड स्टोरी है टू नो मोर अबाउट द कोर्स HR, टू मोर अबाउट द MHRM एंड टू मोर मेनी थिंग. स्टार्ट करते हैं इनसाइड स्टोरी फ्रॉम द टू हॉर्सेस माउथ फ्रॉम IIT खड़गपुर MHRM कोर्स. चलो देखते हैं उनका क्या है. Okay, so let's start with the introduction of two, you could say, the future HR manager from IIT Kharagpur, MHRM. Please, can you introduce yourself so we know you better? Warm greetings to everyone. This is Saubhagya Swai. I am a first year MHRM student currently at IIT Kharagpur. I have completed my BBA LLB degree from Gujarat National Law University. And I also have a cumulative work experience of 2.5 years as a corporate lawyer at Wipro, and then subsequently as a practicing advocate at Odisha High Court and lower courts. And so that is in just a summary of my profile. So I would like to request my colleague Drishti to go ahead with her profile. Thank you, Sabhagya. Hello everyone. I'm Drishti Agarwal. I am from Pune, Maharashtra. I've completed my bachelor's and master's in psychology from Pune University itself. Post that, I'm currently in the first year of my master's in human resource management program at IIT Kharagpur, and I am a fresher. Thank you. Okay, so Saubhagya, if I didn't heard wrong, you are lawyer. Yes, sir. And Drishti, you are fresher and the arts bag. Yes. So this is what? This is DU MHRM और what ये क्या है? ITs है. What is the eligibility criteria? मुझको ये बताओ कि मतलब जनरली ITs में लोग जाते हैं क्या? इंजीनियर्स. आप लोग कैसे पहुंच गए? What is the eligibility criteria? So, sir, the eligibility criteria is you should have a minimum 4 years of bachelor's degree or a postgraduate in any subject. So, I have a postgraduation in psychology. That's why I'm eligible for taking admission into IIT Kharagpur MHRM. So it's 10 plus 2 plus 4 of any 10 4. plus 2 plus, yes, any 4. And you got 10 plus 2 plus 3 plus 2. Yes, or a master's degree. That means at least 48 months of formal education after 12th. तो सुन लो बॉस, देखो, if you have 10 plus 2 plus, और ऐसे तो कुछ नहीं है ना कि मैथ्स होना चाहिए. No sir, no such requirements sir. Like the plus 2, because बहुत जगह होता है कि इंजीनियर्स तो आप हो, चलो at least 48 हो, but 12th में मैथ्स होना चाहिए, and you don't have a maths. Yes sir. So one more point I would add. So the background of this course is that it's organized by Department of Humanities Social Sciences in combination with collaboration with Vijay Soma and Rajiv Gandhi School of Law. So since Humanities and Social Science Department is conducting it, that's why they try to keep a broad pool of applicants from different backgrounds. And that's why this is not a heavily, say, statistics or maths oriented course. It's something that is that can appeal to all streams of applicants.
So you said three names: department, IT, and the some law. What is the law? Yes, sir. So Department of Humanities and Social Sciences, in collaboration with Vijay Som and Rajiv Gandhi School of Law, that IIT Kharagpur also has a school of law of their own. So Okay, these three so it's a wings, VJ Somi is also the one of the partner in this. in Uh, academic collaboration, they are there. So they there are some courses that we attend along with Vijay Som students. so the same pool of faculties are teaching you the same courses, For some common courses, the common faculty courses, is same. Yes, sir. and you sit along with your the VG same pool of student. मतलब एक ही क्लासरूम में आप लोग दोनों बैठते हो. Yes, sir. Awesome. मतलब ये बहुत अच्छा है ना. That is department and the VG Som and the IITs. Best collaboration मिल रहा है आपको. And the law. If I am not wrong, HR में law practices जो होती है वो कौन करता है? मतलब ये classes कौन लेता है? Human psychology, or you could say the labor laws. So like 2 years, till 2 years ago, it used to be conducted by Rajiv Gandhi School of Law itself in their premises. Now we have a dedicated faculty of our own who who conducts classes for the labor law subject. But we still do some activities and events in cooperation with Rajiv Gandhi School of Law time in between. So no, though we now have an in-house faculty dedicated for that. Great. So it's all about the HR. So बात करते हैं eligibility. That is 10 plus 2 plus 4. ये बताओ कि क्राइटेरिया मतलब कैट में कितने स्कोर पे अप्लाई करने को आप सजेस्ट करते हो? So for general and EWS, we would say 80 percentile अगर आपको आया है, so you can definitely apply for the course. And for SC, ST, PWD, 53.33 is the percentile that you can apply for this course. And yes, sir. And for OBC, 72 percentile पे you can apply for this course. So okay, percentile भी nominal है. But you people are looking for what? Profile कुछ होता है या इतने percentile पे call कर देते हो आप? If someone is 81 percentile, तो are you going to get a call or not? Yes, sir. If you have a percentile above the cutoffs that are fixed, you'll definitely get a call. And we look into the entire profile, academic profile of the candidate, along with their work experience and diversity factors that they bring in. And it's a confidential formula, but it's a formula that gives adequate weightage to all the elements of a candidate's profile. So the CAT is not the only determining factor. There will be other elements that will be factoring into it. इतना confidential formula क्यों रखते हो आप? मतलब कि if people having 81 and बहुत decent अगर आपका इंटरव्यू होता है तो आपके confident formula से उसको selection मिल सकता है क्या? Yes, sir. If somebody, like, we give a proper weightage to all elements. It's not like the weightage is skewed towards one particular element. So अगर एक candidate interview में काफी अच्छा कर लेता है, then he can compensate some drawbacks in some other aspects that he might be having. And we have such cases also, people who have converted at say nominal percentiles like 83, 84 also, because they had a very good interview during the selection process. मैं इंटरव्यू में बात करूंगा. मतलब कि ये बताओ कि आखिर अगर हम यहाँ पे बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, बहुत सारे लोग सुनेंगे, ये एचआर में आप कहाँ रेट करते हो अपने आप को पूरे ऑल ओवर इंडिया में? आपको कहाँ रेट करते हो? फिर मैं देखूंगा कि एग्जैक्टली आप सही बता रहे हो या क्या है, क्योंकि मेरी अपनी रेटिंग है. Yes, sir. So like there are different clusters of HR programs we can say in India. Like the cluster 1, tier 1 obviously would be the usual suspects, Accelerate, TIS and MDI. Then say the cluster 2, we can consider established programs like NMIMS, Mumbai, SCM, HRD, and IM Ranchi also has been going on for some time. And we would consider ourselves almost close to the cluster 2 only, and say one of the leaders in cluster 3. But because of some unique value proposition that we bring in form of a great ROI and in form of exposure that we provide, because this is a full-fledged university, a IIT, where you are exposed to people from different backgrounds, and a lot of peer learning also happens during the course of your education. And we have some candidates in the recent few batches who have left colleges in cluster 2. They were given admits there and joined IIT KGP subsequently. So that's why we would say somewhere nearby cluster 2 only. Okay, so I'm happy you didn't say you are better than Excel, right? That obviously नहीं है ना कि अपने गली अपने मोहल्ले में तो सबको ही आप समझ ही रहो क्या है नहीं है. ये आपका सेशन है, तो आई एम हैप्पी कि यू डिडंट से कि यू आर बेटर देन एक्सेल, राइट? चलो ठीक है, ऑनेस्ट थोड़ा सा तो चलो ठीक है. एचआर एक्सेल, राइट? इफ यू हैव एक्सेल कॉल, डोंट ज्वाइन द खड़गपुर. मतलब अगर आपके पास एक्सेल है, यू हैव टिस, यू हैव एमडीआई, तो खड़गपुर आने की जरूरत नहीं है. एमएचआर में मत आओ.
But if you have like NMIMS, IIM Ranchi, SCMHRD, so you could think of the Kharagpur if and only if when you are providing some value proposition, जिसमें आपने बात करी, the ROI. What is the fee? So the total tuition fee is 3,75,000 per semester. And the additional fees ranges from 1.5 to 2 lakhs. So we could say around about 5 lakhs, including 5 everything, lakhs hostel. में रहना खाना पढ़ना सब for the general. For Yes, the category के लिए भी मैंने कुछ सुना है कि कुछ है. Yes, so for category, like the tuition fees they're exempted from tuition fees, so they just have to take care of hostel and mess charges that range around 1.5 to 2 lakh for 2 years. Okay, so if someone is from the category, तो उसे only 1.5 देना है for the 2 years. And वो category बंदा अगर SIP ले ले, तो कितने तक का SIP जाता होगा? SIP का मैं तुम्हें बता दूं, जिनको नहीं पता है, that is summer internship. Yes, sir. So the summer internships ka for this year, the highest stipend has been 2.12 lakhs for 2 months. Our average is 1.15 lakhs for 2 months, and our median is 1.2 lakhs for 2 months. So SIT Median में 1.2. मतलब कि अगर आप कैटेगरी के हो तो क्लस्टर 2 में जाना तो डेफिनेटली जाओ. दे हैव अ ब्रांड एज सेट बाय यू पीपल, बट यहाँ पे फ्री में पढ़ाई हो सकती है. एनआईटी का रहना खाना फ्री, मतलब 2 साल तक आप फ्री में सब कुछ कर सकते हो. और उसके बाद प्लेसमेंट उठाओ. व्हाट इज द प्लेसमेंट, क्या चलता है? the placement, so like the final placements for this year have been concluded, and the average that we saw was 15.43, the median was 15.5 LPA, and the highest went till 23 LPA. And sir, one more thing is that our lowest is 11 LPA. So lowest is 11 and 11 you people are LPA. for the HRM, and HRM में I think bonus बहुत ज्यादा नहीं होता होगा. This is what I personally believe कि bonus तो होता है, थोड़ा सा रिक्रूटमेंट बोनस होगा, कुछ और बोनस होगा डेफिनेटली, मना नहीं कर रहा हूँ, बट बोनस तो सेल्स वाले को मिलता है. तो अगर रहता है, pardon, इन हैंड कंपोनेंट ज्यादा ही रहता है एचआर पैकेजेस में. हाँ, इन हैंड परसेंटेज वुड बी मोर डेफिनेटली. तो अगर 11 है तो आपका इन हैंड अराउंड 80-90 तो पहुंच ही जाता. 80,000 75,000 समथिंग 80,000 इन हैंड होगा. यस, आई थिंक सो, बट डेफिनेटली एलपीए में क्या. तो दिस इज व्हाट वी कुड से द ROI किंग. मैं अगर बोलना चाहूँ तो डेफिनेटली होगा. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एफएमएस की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो अलग क्लस्टर ही है. एचआर में मुझको नहीं लगता है कि कोई इतना सस्ता होगा. टिस के अलावा सेकंड हम ही कितना मतलब मार्केट में होता है ना, जो सस्ता है वो खराब है. सर उसमें वो टिस एक एग्जांपल बनता है ना. टिस के बाद सेकंड बेस्ट ROI ऑप्शन हम है एचआर के मामले में. तो टिस आल्सो हैज दिस एस्टैब्लिश्ड लेगेसी कि वो इतना बढ़िया ROI प्रोवाइड करते हैं. दे हैव नेवर एंगेज्ड इन फी हाइक्स और एनीथिंग, because some institutes they provide they believe in providing quality education which is accessible to all sections of society. Like money shouldn't be a hindrance for somebody's higher educational aspirations. So that is also a philosophy that we stand by as a. I think it's not a philosophy. मैं इसको rephrase करूँ तो TIS is a trusted education institution, इसलिए वो सस्ता है. And you are in the premises of IIT. गवर्नमेंट एड बहुत ज्यादा मिलती है, प्रोफेसर्स को पैसे गवर्नमेंट देते हैं, इसलिए आप सस्ते हो शायद. अदरवाइज अपने पॉकेट से अगर पैसा देना होता, एंड आई थिंक टीचर प्रोफेसर्स भी अच्छे ही होंगे. ये सर प्रोफेसर्स का प्रोफाइल का अगर बताऊं, सो सम ऑफ आवर प्रोफेसर्स हैव बीन विजिटिंग फैकल्टीज एट IIM Bangalore, XLRI Jamshedpur also. Some of यहाँ से वहां जाते हैं कि वहां से यहाँ आते हैं? Means in their past they have been visiting faculty for some semesters and some courses. Your professors are going to Bangalore? हाँ, IIM Bangalore and XLRI Jamshedpur. And a lot of them have previously worked at esteemed institutions. Like a lot of them have worked in different IITs as professors and in some IIMs as professors. And then they have joined this IIT KGP MHRM program. So this is the clear communication. If you are planning to go for the HR, अगर पहले से HR में दिमाग बना लिया है, and you tried for the Excel, you tried for the test, you tried for the MDI, अगर नहीं होता है तो definitely मैं बोलूंगा कि इसको आप सोच सकते हो, because it has ROI. और अगर इस तीन के अलावा क्लस्टर 2 के भी जो नाम है, अगर वहां नहीं तो मतलब MHRM you could say कि अगर HR है तो सोचा जा सकता. Yes sir. And definitely, and the CAT percentile is, you are only taking the CAT, nothing else. कोई और कोई एग्जाम्स नहीं देते हो आप? नहीं, only CAT percentile पे basis. Decent है 80 percentile for the general, बहुत अच्छा है. And for the category बहुत अच्छी बात है. तो ये सब बताओ कि ये मतलब हवा में है या कुछ है? आपका बैकग्राउंड भी, alumni क्या हिसाब किताब? Sir, so I personally am a member of alumni cell. So
our alumni are holding high positions in a lot of reputed MNCs and global and Indian both. So we have people who are holding designations like head HR or senior vice president HR at say investment banks. If you consider, we have people in Nomura Securities head HR there, and in Barclays, and also in ICICI Bank also we have people who are holding high positions. In terms of other companies, Indian conglomerates, we have a lot of alumni of ours are in head positions in Reliance across different companies of theirs. And we also have people in the IT and ITS sector. We have a lot of our alumni joining there. So in Cognizant, we have a person who is a head HR there. So we have faculty across all kinds of domains and sectors that is imaginable, because this is a long running course. It has a legacy of 40 years. So that's why we have a lot of faculty, a lot of alumni who have reached high positions over the 20-30 years of their career. Great. So what is about the placement scenario? I'm trying to post placement. It's about the hiring or the consulting, HR consulting, where people are going. If I'm going to join the MHRM, so मैं अपने आप को फ्यूचर में कहाँ देख सकता हूँ? HR मैनेजर इन अ कंपनी, HR कंसल्टेंसी, रिक्रूटमेंट, किधर जाना चाहते हैं? मतलब किधर जाता है लोग? ये बताओ, प्लेसमेंट कहाँ कहाँ आती है? कंपनी किस प्रोफाइल के लिए प्लेस करती है? सर सो लाइक फॉर द प्रोफाइल्स, जो प्रोफाइल्स के लिए हमारे यहाँ पे आती है, लाइक HR BP, मैनेजमेंट ट्रेनी, HCM कंसल्टेंट, ग्लोबल स्ट्रैटेजिक HR पार्टनर, देन टैलेंट एक्विजिशन स्ट्रैटेजिक पार्टनर, L&D स्ट्रैटेजी. सो अलग डिफरेंट डिफरेंट HR फंक्शंस के लिए हमारे पास कंपनीज आती है प्रोफाइल्स लेके. सब कुछ है यहाँ पे. आप बच्चों को बता दो कि L&D का मतलब क्या है. उनको तो ऊपर से निकल गया होगा. L&D is learning and development. It is an HR function. तो उसमें basically whenever you join an organization, तुम्हारा एक training होता है, एक learning curve होता है. So L&D, the learning and development function takes care of the entire. अब यहाँ पे मैं एक बात और करना चाहता हूँ कि HR क्यों ज्वाइन करे? रंगोली बनाना है क्या? मतलब काम क्या है HR का? अगर कोई बच्चा पहली बार देख रहा है, उसको नहीं पता HR है, तो उनको तो यही पता है कि HR का मतलब क्या होगा, कि पार्टी करते हैं, रंगोली बनाते हैं. मतलब द लिटरल मीनिंग जो लोगों को समझ आता है कि क्या है, एम्प्लॉय को खुश करना. जी सर. अभी के टाइम्स में, जो करंट टाइम्स में, जैसे ये कोरोना वायरस के पैंडेमिक के कारण जैसे हमने बड़े शिफ्ट देखे वर्क प्लेस में, जैसे वर्क कैसे कंडक्ट किया जाता है और फ्यूचर ऑफ वर्क के बारे में डिस्कशन आए, रिमोट तरीके से वर्क करना. ये ऐसे टाइम्स में ज्यादा हाईलाइट हुआ इंपॉर्टेंस ऑफ HR एज अ सेक्टर. And some recent examples like illustrate that HR professionals are equally competent as professionals from any other MBA domain. Like we saw alumni from XLRI who became the CEO of Chanel, big French multinational company. So there are a lot of examples, like in Wipro, where I was working. I have been in several corporate meetings where they emphasize the importance of HR function in keeping the Indian IT industry running. Because if you don't have adequate staff and qualified staff on your roster, then you cannot service clients properly. So it's like the backbone of any successful company. And so it is through such experiences only where I realized that HR is something that is beyond rangoli making. Like even we used to, when we entered industry for the first time, think of such jokes, making such jokes about HR. But then when we attended talks by such dignitaries and saw the kind of work life struggle that they go through, तो we realized obviously कुछ इंटेंस ही होगा अगर ये लोग इतने इंटेलेक्चुअल लेवल पे बातें कर रहे हैं, ये कर रहे हैं. सिर्फ ऐसे हल्के फुल्के चीज तो होंगे नहीं. तो अभी हम आके एक सेमेस्टर पढ़ के रियलाइज कर रहे हैं कि हाँ, इसमें बहुत कुछ होता है जो ओवरऑल एक पर्सनैलिटी एक बंदे का होना चाहिए, तभी जाके वो एक HR फंक्शन को हैंडल कर पाएगा. अब ये बताओ कि HR किसको लेना चाहिए? बंदे में क्या चीज हो तो वो डिसाइड कर सकता है कि वो HR की तरफ जाना चाहेगा? सो इसमें सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट स्किल है कि आप में इंटरपर्सनल स्किल्स होने चाहिए, क्योंकि HR इज heavily people oriented profession, which from the day in to night out you will be interacting with people from all strata of society and all types of backgrounds. So you should be comfortable with communication and with emotional and empathetic understanding the person in front of you and realizing their potential. तो अगर आपको लोगों के साथ एंगेज करना अच्छा लगता है और अगर आपको लोगों के साथ मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बनाना, प्रोडक्टिव रिलेशनशिप्स बनाना अच्छा लगता है, कोई भी फील्ड से आप हो सकते हैं, लेकिन आपने अगर एंजॉय किया अपने टाइम में, अपने लाइफ में लोगों के साथ रिलेशनशिप्स बना के उनके साथ अच्छे प्रोजेक्ट्स पे काम करके प्रोडक्टिव आउटकम्स लाना, तो आप एक फील्ड को कंसिडर कर सकते हैं. दिस इज अ फील्ड दैट डजंट हैव वेरी हाई
barriers to entry. It is something that anybody with a passion and with a genuine interest can choose to pursue. कितना पैसा मिलेगा? सैलरी कितने तक जा सकती है 5-10 साल के बाद? Drishti will answer that question. She is from our placement committee. Placement कौन? हाँ प्लीज बताओ. I think like कहाँ तक कमा रहे हैं? And अभी जब जाऊंगा तो कहाँ तक मिलेगा पैसा? सर तो लाइक जैसे मैंने बताया हमारा एवरेज तो 15.43 है और हाईएस्ट अभी स्टार्ट हुआ है 23. सो आई थिंक अगर अभी आप उससे भी स्टार्ट अगर आप लोएस्ट से भी स्टार्ट करते 11 से भी स्टार्ट करते हो तो एक 5 years डाउन द लाइन आप यू कैन एक्सपेक्ट अ गुड पैकेज ऑफ अराउंड 26 to 30 के रेंज में 26 to 30 LPA के रेंज में एंड इफ यू स्टार्टिंग विद द हाईएस्ट इफ यू स्टार्टिंग विद 23 देन यू कैन सर्टेनली एक्सपेक्ट मोर देन in 5 years you can go for a good amount. मेरे को एचआर को लेके थोड़ा सा कंजर्वेशन है कि बॉस एक कंपनी में हार्डली 2-3 एचआर ही होते हैं अगर टॉप पे देखा जाए, बाकी तो सेल्स मार्केटिंग फिनांस होती है. प्लेसमेंट दे देते हो आप लोग? एचआर में हो जाएगी प्लेसमेंट? Yes, हमारा 100% placement record है. Like even a final placement 100% placed and our SIPs are almost over. So placements का तो SIPs are over. Almost. तो IIMs में भी SIP चढ़ ही रहे हैं. And you people have completed your SIP. No, we are almost over. So like we are सिर्फ a few students are left now. So like placements 100% मिल जाता है यहाँ पे. That's for sure. That's great. With a 100% placement in the small fee, I think लोन भी नहीं लेना होगा लोगों को. कहीं से ताऊ चाचा से पैसे मांग लेंगे, काम चल जाएगा. यहाँ पे मोस्ट बच्चे कोई लोन पे नहीं है, मतलब मोस्ट बच्चे सेल्फ फाइनेंस्ड ही है, तो वो एक बेनिफिट रहता है इस कोर्स का. ग्रेट. कोई और भी स्कॉलरशिप है क्या? इफ फॉर द बीपीएल आईटीज में कुछ स्कॉलरशिप होती है क्या? Yes sir, government institutes में there are a lot of central government scholarships for say minority community students or SC/ST students. So all of those central government, state government schemes are applicable if you are studying a program in IIT. So all of them will be applicable for our program also. अब आप ये तो आईटी हो गया, खड़गपुर हो गया, मुझको आपके बारे में जानना है वन बाय वन. मिस्टर सुहैन, BBA plus LLB, क्या फितूर समझा कि HR ज्वाइन करना? So during my initial undergraduate days, like since I took the BBA stream, so I always had an inclination for doing a MBA down the line in future. And when I joined as a corporate lawyer in IIT company, there I got I worked for around 1 year there, and I got exposure to almost all the business major domains. So I was working in the contracts team, and I worked with the sales and marketing team, out with the finance team and the HR team. So when I had interactions with these 3 major domains, so there I could see that I could identify myself down the line in future as a people person, as somebody who can deal with issues that largely concern people. Like other functions also have their pros and cons. So I would say that for every individual who is watching this, they should make a rational assessment of their strengths and weaknesses. And if they find themselves aligned towards doing things that largely revolve around people, तो मेरे को लॉ में एक जो मेजर ड्रॉबैक लगा, वैसे लॉ ऑल्सो इज अ वेरी फ्रूटफुल करियर, कॉर्पोरेट लॉ भी, बट उसमें ये था कि वो बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन और बहुत ज्यादा प्रोसेस ओरिएंटेड चीज था. उसमें ऐसे पीपल पे आप डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं देख सकते अपने आपके काम का. बट ये एक चीज मैंने HR फंक्शन में ऑब्जर्व किया कि वहां पे आप डायरेक्टली एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देख सकते हो पीपल के लाइफ पे, जो लोगों को आप ये कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, या उनके लिए जो कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं. तो वो चीज अगर आपको ग्रेटिफिकेशन देता है लोगों के लिए लाइफ में कुछ इमीडिएट इम्पैक्ट लाना, तो उसके लिए आई विल श्योरली रिकमेंड. डेफिनेटली. एंड साइकोलॉजी प्लस लॉ तो वेल नोन फैक्ट है कि वो होना ही होना है. फाइन. तो अब ये बताओ कि इंटरव्यूज कब, लास्ट डेट कब है फॉर्म फिलिंग का? So 7th Feb तक हमारे applications open है. 7th Feb is the last date for applying to MHRM. Is the last date. Yes, Expected date of interviews? Second week of March tentative. Yes. Second week of March में हो जाएगा. मार्च मिड से अप्रैल के मिड तक उसी रेंज में हो जाएगा. डिपेंड्स अपॉन के नंबर ऑफ फॉर्म्स कितने हैं, उसमें आप ले लोगे. ये क्या है, ऑनलाइन होना है या ऑफलाइन? Online, sir. So the interviews will be online and सिर्फ personal interview conduct किया जाएगा, like based on the only personal. the PI online, ये बहुत important है. Now कुछ क्वेश्चंस आउट करवाते हैं. स्वान आपसे पहले, देन मैं आऊंगा दृष्टि. एज्यूम आपके सामने एक BBA plus LLB का बच्चा बैठा हुआ है and you are in the interview panel. एज्यूम मान लेते हैं. 3 क्वेश्चन क्या क्या पूछोगे उससे? BBA plus LLB सेम बैकग्राउंड, कोई बैठा हुआ है. 3 क्वेश्चन क्या क्या पूछोगे आप? Sir, first question, the major one, why HR, and the second question, the follow-up would be
that what are the personal experiences in your life that motivated you towards choosing the HR stream and that make you think that you would be a good fit for the HR domain. And the third question would be why this program? Because we always look for a good program candidate fit. Like if the candidate is culturally and academically a good fit for this program, that is also a very vital factor to us. So there's no technical question of the labor law. What is the labor law? What are the new development in the law? Nothing. ऐसा कुछ नहीं पूछने वाले हो. So the major three questions I wouldn't include technical stuff because those things a person can read upon later also. If he's a genuinely interested and passionate candidate, we can train him on that through our program through the course of time. So, Drishti, what could be the three questions you are going to ask to a male person because HR is mainly the female dominating sector. पता नहीं सौभाग्य कैसे आ गए यहाँ पे. BBA plus law plus male, ये तो डेडली कॉम्बिनेशन है. HR में तो ऐसा होता ही नहीं है. मतलब जिसको कुछ नहीं मिलता उसको HR ज्वाइन कर लेता है. लोगों का अभी फीडबैक यही रहता है कि यार क्या करूं, फाइनेंस नहीं मिला, मार्केटिंग नहीं मिला, चलो HR कर लेते हैं. हाँ दृष्टि, कम टू दिस. Like agar if I'm asking a psychology graduate, like someone psychology background se, so one I'll ask them ki like why do you want to venture into HR after psychology? Matlab what did you study in psychology that got you interested in HR? Then second will be some like Saubhagya mentioned, our past experiences can act as major examples of why we are interested in something as of now and how we can impact that. So like तुमने past में अगर उनका work ex है, so what like in your work experience have you had any such instances that made you believe that you could make a good HR professional? So that, and then अगर if it's a fresher, then what did you study in psychology that can help you be an effective HR professional? And lastly is why would you like to choose this course, because that is a very major important question कि out of all the courses like आपने बोला cluster 1, cluster 2, cluster 3, so why would you like to choose IIT Kharagpur to understand even the candidate's inclination towards the course and उन्होंने कितना research किया about the course before the interview. Everything depends upon the profile and everything. No hardcore academic question. If academic पूछना होगा तो एक question बताओ कि कौन सा मतलब पूछोगे. दृष्टि आप and then बाग सुनभाग. So like for the psychology. So mere in my interview experience, what I was asked related to academic was about different motivational theories. So what I studied in psychology was different theories for different psychological aspects. So they asked me different motivational theories that can be applied in the workplace. So that was one academic question that can be asked if you're from a psychology background. Yes, sir. So I was asked about say labor law ka specific act, Trade Union Act ka. I was asked like which year was it passed and what are the major objectives of that act. So like that way my suggestion to candidates will be like from your own curriculum, if you or from your own life experiences, if you find some portion that is related to the HR domain, you should read up a bit thoroughly on the basic concepts of it. Even if you give the wrong answer, like later on our professors clarified about our interview experiences, they're like, we are not exactly searching for the exact accurate answer. We are searching for a problem solving or a critical thinking skill that at least you are attempting in a rational way to come at some sort of conclusion and you're showing some initiative. So I would say that brush up your basics and just try to be confident and keep a cool attitude. That's the most important. It's even not for the MHRM, for everything. We are not looking for the perfect or the right answer. We are looking for the rational approach. बहुत अच्छा. So I think if you are planning to go for HR and not landing in the top 3, so definitely HR का MHRM का फॉर्म भरो. फॉर्म तो भरो, कन्वर्ट करो और सारे क्लस्टर 2 और HRM को कन्वर्ट करो. Then decide करो कि कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना. This is I think the rational choice अभी जो होगा. कि कम से कम ये बाद में रिग्रेट नहीं हो कि हमने फॉर्म नहीं भरा. तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इफ यू आर नॉट टारगेटिंग ओनली 3, HRM का फॉर्म तो भरना चाहिए. इवन यू आर लुकिंग फॉर द HRD, यू आर लुकिंग फॉर द NMIMS, यू आर लुकिंग फॉर IIM रांची, उसके साथ आप इसको फॉर्म भरो. ये मेरा ऑनेस्ट सजेशन इसलिए कि हो सकता है कि वहां 3 कन्वर्ट हो भी जाए, नहीं भी हो जाए. एक हाथ में होना चाहिए. 1 in hand is better than 2 in both. So बहुत अच्छा है. So I'm really मैंने जो सोचा था कि जब इंटरव्यू को मैं कंडक्ट करूंगा, इस सेशन को कंडक्ट करूंगा, दिस अगेन सेशन इज हैपनिंग एट 11 o'clock. आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू कि आपने अभी ज्वाइन किया, बिकॉज मेरा टाइम बहुत ज्यादा भी पैक चल रहा है. आई थॉट कि 2 इंजीनियर्स बैठे हुए होंगे, बट वी हैव अ प्लेस कॉमर, एल कॉमर. प्लेस कॉम इज द पीपल एंड द एलुमनी कमिटी, BBA plus LLB plus psychology. This is really what I'm looking for. कि देखो है, if you have 10 plus 2 plus
3 और 4 जो भी आपका एलिजिबिलिटी है, आई वुड सजेस्ट कि फॉर्म फिल करना चाहिए. एनी सजेशन फ्रॉम बोथ ऑफ यू अपने बच्चों के लिए, मतलब इस जो आपका है, दैट इज यू आर सेइंग कि 15th ऑफ मार्च वी आर द फर्स्ट 45 डेज में क्या तैयारी करनी चाहिए फॉर्म भरने के बाद? So I think, okay. Go ahead, Dish. Okay, thank you. So I think one is कि major एक question हर interview में पूछा जाता है कि tell me about yourself. So any candidate should brush up about them. एक answer रहना चाहिए उसके लिए about yourself. Why MBA? Why HR? And then learn about if you have work experience. अपने work experience का एक proper summary होना चाहिए कि what did you do in your work experience? How did that impact the organization? What initiatives did you take? And थोड़ा academic related, you should have some knowledge about your internship or a basic knowledge about your internships and projects. Like I wouldn't say the interview goes towards a very technical side, no, but if you're a fresher specifically, then you should have some knowledge about your academics. And mainly, like Saubhagya said, you have to be cool in the interview and be confident. And one important thing is that they are even trying to see your problem solving abilities. Like how, like if you're I was given a situational question in the interview, so how you how you think about it, the rational of how you think about it, the steps that you take towards it. So they've been looking towards that. So they're not looking towards the right answer, but the process that you're following to reach the answer. So just be confident, be cool, and be prepared for the interview. Don't come to an interview unprepared. Have the basic answers with you. That's very necessary. So that, Saubhagya, you can go. Yes, sir. So Drishti has already encapsulated like the very crucial points one should keep in mind for MBA interviews. But my genuine heartfelt advice would be like every candidate should be completely sure about who he is as a person. That is, I think, basically the gist of most interviews that I went through during my B school selection processes. If you are truly aware of who you are as a person, that is something that impresses the panel who is sitting before you, that this person is aware of who he is, what his goals are, and what does he want out of his life. So if those basic things are clear with you, other things will genuinely fall in place eventually. Great. So I'm taking a lot of sessions with a lot of people, but यहाँ पे मैं generally बोल सकता हूँ कि HRM, if you are thinking for the HR, you should think of the dedicated to the service of the nation. This is what the slogan. मतलब चलो ठीक है, नेशन को सर्व करते हैं, नेशन आपको कम पैसे में दे रहा है, इसका ये मतलब नहीं है. सो MHRM मैंने लास्ट ईयर भी बोला था, दैट इज द ROI किंग. स्टिल ये ROI किंग है. इफ आई एम नॉट टॉकिंग विद द FMS और टेस्ट, अगर मैं इस 2 कॉलेज को हटा दूं तो आई थिंक MHRM could be the one of your choice if you are for the HR. जाना चाहिए. If you are not looking for the brand IIMs like the IIM Ranchi, definitely ये honest है तो मैं blunt होता हूँ. HRM जाइए. अगर IIM नहीं मिलता है तो IIT तो आपके टैग में आ ही जाएगा. मम्मी पापा खुश हुए थे, बेटी IIT जा रही है. कभी सोचा भी नहीं था सपने में. सर 12th का एक सपना था IIT जाने का, वो 5 साल बाद पूरा हुआ, बट पूरा हो गया. ठीक है. थैंक्स both of you. So I'll try to convey wholeheartedly and दिल से मैं बोल रहा हूँ, if you are not looking for the top 3 HR courses, you must apply for, if you are eligible, condition if you are eligible and CAT score clear है, MHRM में अप्लाई करो, अपना बेस्ट दो. एंड दिस सेशन डबल कोटेड इज नॉट अ पेड प्रमोशन सेशन. ये मेरी लर्निंग थी, मैंने इनको इनवाइट किया इनसे जानने के लिए कि मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ. थैंक्स बोथ ऑफ यू. Thank you so much, sir. Thank you so much for spreading awareness regarding this course. Thank you so much. Yes. It was wonderful chatting with you, sir. Thank you so much. Yes. Same here. Thank you.